Oof, I'm back. It's around 2:15 and it was really very hot. It took me around 1 hour, almost 1 hour to reach. So my experience about Crazy Cheesy is that the place and the ambience over there is really very good. Like a funky type thoda ambience hai wahan ka, and it's thumbs up. I mean, I would rate it like 4 out of 5. The ambience, the service is also good. Just the thing is that you have to go down to the counter and then order your whatever dish you want to order. And yeah, the service is really very fast. Like the pizza will become within 10 minutes. Really yummy, very tasty. So today we ordered one peri peri paneer pizza, which was really very awesome. I mean, I like the Crazy Cheesy ka pizza more than the Sam's pizza. So I would say that Crazy Cheesy का पिज़्ज़ा यहाँ, फिर स्मोकिंग जोश यहाँ, फिर सैम्स पिज़्ज़ा यहाँ, फिर अपने डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, वो सब. I mean, the cheese they use is a mozzarella cheese, which was really very good. Paneer was soft and yummy. 2 drinks, that is one virgin mojito and the second is the blue mojito. But I would say that
आई लव वर्जिन मोहितो, बट देन वहाँ का वर्जिन मोहितो मुझे इतना पसंद नहीं आया, बिकॉज वो बेसिल लीव्स का फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा आ रहा था वर्जिन मोहितो में. एंड ब्लू मोहितो वॉज वे बेटर देन वर्जिन मोहितो. थोड़ा सा स्वीट था और मुझे थोड़ा स्वीट पसंद है. सो आई वुड से दैट इफ़ यू गो ब्लू मोहितो ट्राई करो. या एंड देन वी ऑर्डर्ड चिली चीज़ फ्राइज, गार्लिक चिली वाला. मतलब वो जो दे हैव सम लेमन चिली, गार्लिक चिली, चीज़, ऐसा कुछ अलग अलग टाइप्स के हैं. पेरी पेरी चीज़, थोड़ा गार्लिक ऐसा टेस्ट आया था. या इट वॉज गुड. थोड़ा सा यहाँ पे जलन हो रहा था स्लाइटली, थोड़ा सा वो गार्लिक का वो तीखापन, स्पाइसीनेस, बट देन इट वॉज गुड. सो I say that if you want to try crazy cheesy for the first time and gonna buy fries, so buy cheese fries, the peri peri cheese fries. They are really very good. So that's it guys for today's vlog. There is much more coming on this channel, so stay tuned and please subscribe if you haven't, and do comment how you feel about this vlog in the comment section down below. And yeah, just share, subscribe, like, and just keep watching my videos. अगर पसंद आए तो 2 बार देखो, और पसंद आए तो 3 बार देखो, मेरे व्यूज़ बढ़ाओ. Anyways guys, I'll end my video over here. It's around 33-34 degrees outside, और पुणे की गर्मी जानलेवा गर्मी है. मतलब मुंबई में गर्मी रहती है तो पसीना आके निकल जाता है, ह्यूमिडिटी रहती है, पर यहाँ पे जलता है शरीर पूरा. फुल टैन हो गया हूँ मैं. हर में सी टैन हो गया मैं, क्या बताऊँ. चलो बाय बाय.